स्क्रीन दिख रही क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं दिख रही है। है सर, दिख रही है सर। दिख रही है। ठीक है। Okay, sir. So, depending on the previously we were studying the year frequency. We were studying the permanent. सर आवाज नहीं आ रही है। And non-flux are there. सर आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। ऑनलाइन में यही कोई दिक्कत है जी। यस सर, बहुत बड़ी। माइक चलेगा, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम आएगी। हाँ सर, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर बाकी दिन में। ये अनप्रेडिक्टेड है ना, इसमें कुछ नहीं कह सकते क्या चलता है। यस हेलो हेलो, फिर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। भाई अभी सर ही नहीं है। भाई सर ने लीव कर दिया, अभी आएंगे दोबारा।
हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। आवाज कट रही है सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज सर एकदम ही नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। हेलो। यस सर। क्या करें यार, सॉरी यार, दिक्कत हो ही रही है। चले चले। हेलो। स्क्रीन दिख रही क्या? नो सर, नो सर। Okay, so corsity, according to the corsity SC, there are different materials which are characterized, and we have another uh, स्क्रीन नहीं variable दिख रही है सर। maximum. Hello, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। पर स्क्रीन नहीं दिख रही है। इधर से शेयर है, फिर से रीशेयर करता हूँ तो अभी दिख रही क्या? नो सर। अभी नो सर। नो सर।
थोड़ा वेट करो, हो सकता है नेटवर्क का डिले बता रहा हूँ। अभी दिखा? नो सर, नॉट येट। इधर से तो शेयर हो रही है। नहीं हो रहा सर। अभी दिख रहा है क्या? नो सर। तुम लोग सोचते होंगे कि टीचर्स जान कैसे कर। नहीं सर, हम लोग आपका प्रिपेयर कर रहे हैं सर, काफी आप मेहनत कर रहे हैं। तो बोल रहे थे सर आप धीरे धीरे से कोशिश कर रहे हो सर, फिर भी नहीं हो पा रहा है तब भी सर। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सर, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग पढ़ाने के लिए। सर किसी सर कभी कभार हो जाता है सर। ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम सर, कभी भी किसी के नहीं सर, ऐसा क्यों सोचेंगे? हम लोग के साथ भी हो जाता है। नहीं, कभी कोई अदरवाइज हो सकता है ना इसको। नो सर, आप इस लेवल देखो अभी दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा सर। एक मिनट रुको, फिर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें तब ना हो। जी सर, अब दिख रही है सर स्क्रीन। ये स्क्रीन दिख रही है सर, लेकिन आवाज नहीं आ रही सर, कुछ कम दिख रहा है। ओके, हेलो। हाँ, माइक बंद था, मेरे को ध्यान नहीं आता। हेलो। यस सर। ठीक है, हम शुरू करते हैं यार। अब स्क्रीन दिख रही ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर। नो सर। यस सर, दिख रही है। Okay, so hard magnetic material and soft magnetic materials, there are two types, and here different characteristics are there, and depending on their coercivity and remnant flux, they are categorized. So here one another variable is maximum energy product. Okay, so maximum energy product is depending on the uh, product of the quantities in the pH curve, and this corresponds in the second quadrant of the hysteresis loop. So in the second quadrant, what is the area of the graph pH curve, which is at the peak point, peak product. So here maximum available energy product can provide the lowest magnet volume for a given flux density. Okay, so in data sheets of the permanent magnetic materials, this data is also called the figure of merit. So here you can see you have this BH curve, and you can see the different points in the BH curve. So at this point you can see that here the area is maximum. इस कभी आपने वो सोलर सिस्टम का देखा जैसे सोलर पीवी में होता है, इसी टाइप का इसमें एक मैक्सिमम प्रोडक्ट होता है. सो एट दिस पॉइंट
the value of B and value of H both will be very high. If we reach to other materials such as which has the higher value of B and lower value of H, then for the same energy product, same product, the operating point will be here, and for more higher value of B and lower value of HC, the value will be here. So for a constant energy product is there, which is given by a hyperbola. Here, suppose we want to have the energy product of 50 kilojoule per meter cube. Joules per meter cube is the unit of energy product. So the suppose we have the BR, B and H curve like this, and if we change the materials, different materials may have different value of BR and different values of HC. So suppose one of the material is that it is having the energy product of 50, but it has the BR of 50, BR at this point and HC as this point. Clear? मेरा एक एरो दिख रहा ना? Okay, so depending on the required flux density or a constant flux density, if we have the higher product of energy in the higher energy product, that is reduced volume in case of higher energy products. So the volume reduction is given by this equation. For a permanent magnetic material, we have set up of MMF setup from the external source is 0, and by that we can equalize total magnetic material, total MMF and MMF at the air gap. So depending on this equation, because external sources have no any injected MMF in the permanent magnetic material, so it has the relation of this, and also the flux density in the air gap is equal to the flux flux in the air gap is same which flux passes through material. So this equation holds. Now if we replace here in place of mu, we replace in place of Hm, we replace mu. Here you can see AM and Ag there, and mu Hm you can replace here. So by changing this, you can get the volume required in case of certain magnetic material to the relation to the volume required for the air type of material. So here you can get the lower volume required for higher energy product. Here you can see that Vm into Hm is a product of the variables in the xy axis second quadrant in the BH curve. So depending product, the volume is given. If we increase this product, the required volume of the same magnetic flux density, required volume for same magnetic flux density will be reduced. If you increase here, the volume will be reduced, and if you increase, the volume will decrease. So the ultimate requirement of our machines is that we want to reduce the volume, so we have to increase the energy product. Okay, that is in terms of tool. So here we have another look on the how the different permanent magnetic materials are implemented in different fields of applications. Here this is the operating points of the magnetic circuit can be
obtained by using these graphs. So here different graphs are given. You can see here the neodymium iron boron is a material uh, which has the higher energy product. Here thick line, thick continuous line, and here you can see this is the line for neodymium iron boron, and this is the line for samarian cobalt, and L-Nico 8 is given by this line. Similarly, uh, L-Nico 5 is given by this line, and it has the, this is a constant line that is showing that at any operating point the constant line remains represents that area will be same. If we have any graph, any value of b and h in the under this line, a operating point is in this line, we can have the constant area. So this L5 is made up of this is alloy of which was established in 1931, and it has large residual flux density. What is the residual flux density? That is a high value of the flux state. The H is 0. Here you can see if H is 0, the value of B is very high. So where you see L-Nico 5 is this dashed line, and in case of 0H, magnetic field intensity 0, you have the very high value of flux density. So this is called the remnant flux, and this is very high for L-Nico 5. Similarly, L-Nico 8 has the lower flux density and a higher coercivity than L-Nico 5. Lower flux density and higher coercivity means it shifts from here. Okay, so here you can see that the area is somehow equal, this area and the area under this curve, this dashed line 0.8 and here 150 approx. So here you can see that the maximum flux density, the remnant flux density has reduced, but the magnetic this is coercivity, that coercivity that is in case of zero magnetic flux density, what is the value of uh, magnetic field intensity. So this is the coercivity. So this is actually the required MMF to reduce the density to 0. तो उसे इंटेंसिटी देनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तब वो फ्लक्स 0 होगा. So this value has increased uh, comparatively to the L-Nico 5. In L-Nico 8 has increased coercivity. This is hard L-Nico 8 comparatively to L-Nico 5. Demagnetization cannot easily be done in L-Nico 8 as compared to L-Nico 5. Disadvantages of L-Nico materials are that they have the relatively lower coercivity and magnetic mechanical brittleness as compared to other newly established magnetic materials such as you have neodymium magnets. So these type of materials are not suitable for the machines which require the high torque and high power.
because in case of high torque and high power, the mechanical brittleness will play a worse role on machine. So here these are the some. This is one of the size magnets. Magnets. This is generally made up of iron oxide and barium or strontium carbonate powder, and it has a residual flux density lower than the liquid materials, but it has further higher value of uh, coercivity. You can permanent magnetic material के लिए अच्छी ज़्यादा प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि मैक्सिमम प्रोडक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि अगर हमारा फ्लक्स डेंसिटी कम बन पाएगा तो वेट बढ़ेगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सेम फ्लक्स डेंसिटी विल बी हायर। उतना ही फ्लक्स बनाने के लिए हमें ज़्यादा क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी उस मैग्नेटिक मटेरियल का कम है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, तो हमें ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, सो ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए। हाउएवर मैग्नेट की एक इम्पॉर्टेंट है कि कोर्सिविटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, मीन्स दे कैन नॉट इजीली बी डिमैग्नेटाइज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट ceramic 7 is given by this line 0.4 and minus 300, less than minus 300 approximately. So this has further reduced value of magnetic flux density, but it has increased coercivity. So it is, all these three are somehow nearly comparable because one has increased coercivity and other has increased flux density. तो हमारा प्रॉपर रिक्वायर्ड है कि ये एरिया पूरा ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स सपोज नाउ वी कम टू द Sumerian salt, neodymium iron boron. So here you see 0.8, 0.95 to here you can see minus 7, 670. So here coercivity is also very high as well as the flux density is also high. Okay, so you can see that so coercivity in the ferrites is very high. So ceramic 7 have good mechanical characteristics and inexpensive to the manufacturers. हमारा रिक्वायरमेंट रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए मेन रिक्वायरमेंट है कि दे शुड आल्सो बी मैकेनिकली स्ट्रांग. सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ should have, there will be a relative moment in the permanent magnetic material. So ceramic magnets have the good electrical good mechanical property also. And Sumerian cobalt is highest value of you can see the area maximum energy product. So nowadays neodymium magnets are used because they have the better magnetic properties in the machines. Now we come to the problem which was left in the previous two sections of problems. One is this, and in the first part, it is asking
if air gap area is reduced to Ag equal to 2.0 in place of Ag equal to 4 centimeter square. So minimum magnet volume required to achieve an air gap flux density of 0.8 टेस्ला. तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी प्रोडक्ट है उससे आप निकालेंगे. So all of you सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. हाँ सर, Yes, आवाज sir. कट गई. Start doing. आवाज कट रही है सर पूरी. हेलो. यस सर. सर अभी आ रही है. स्क्रीन दिख रही क्या? नहीं सर, नहीं दिख रही है. अब दिख रही है सर. ये प्रॉब्लम नोट करो. और एलिको 5 का ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, वो ग्राफ में हम अभी दिखा देंगे जो भी वैल्यू तुम्हारी आएगी. तो आपको ये फ्लक्स डेंसिटी बी जी इन द एयर गैप इसको कैलकुलेट करना है. एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी. ठीक है, तो एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकलेगी. You can see here that the core is of high permeability, mu tends to infinite. Okay, and one magnetic material is there, means this is a soft or hard type of magnetic material which has high coercivity and high flux density, and this works as a magnet. Okay, so this part is magnet, and here there is no any external MMF injected in the system. Okay, and this magnetic material will have no any reluctance because it has high permeability. Reluctance is 0. So in that case, a relation holds, that is the flux which is passing through, which is coming out of this magnet is passing through the air gap also. Same flux is passing through the magnet and air gap. So here BEM equal to BEM AM equal to BGAG. ओके, तो ये वाला फार्मूला लगेगा उसमें. क्लियर. So I will give you the points how to calculate. So you have to first calculate this relation
what I had said to you. तो आपको जो मैग्नेट का एरिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ मैग्नेट, वो निकालना है। ये वाला क्वेश्चन है ये। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस, ओके, एंड दीज आर द मेन टू इक्वेशंस। क्लियर? तो यहाँ पे आप बिकॉज देयर इज नो एनी एमएमएफ, सुनाई दे रहा ना अभी? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, यस सर। तो बीच में एक आध जन ऐसे रिस्पांस दे दिया तो नहीं तो लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, पता ही नहीं चलते गए। तो यू कैन सी हियर द length of the air gap into length and the magnetic field intensity in the air gap length plus the magnetic field intensity in the magnet and the length of the magnet equal to 0, because the MMF in the magnetic circuit depends on the MMF set up by the magnet, okay, and here you have the permeability of the core material equal to 0. So reluctance of the core material is totally 0. So that is not a part of, you can assume that due to that there doesn't come any term related to the magnetic material, only there will be the terms आवाज नहीं आ रही है सर। यस सर, आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आवाज कट के आ रही है। the magnet material जो HM है that आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो 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 Yes, अब आ रही sir. है सर। हेलो, यस सर। Yes, अभी sir. तुम लोग कोई audible. क्लास भी यस सर। Yes, sir. Optimization ठीक है, technique. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग बंद करता हूँ और